Good morning, guys. Praful here. Welcome back. Thanks for joining in. And today is 23rd of August. Today is a Monday, and after a very eventful, a very shady Friday, after that 16,450 call option come hangama. So I'm a bit scarred after that incident because like I was not even at the receiving end of it, but still just looking at what happened itself gives me kind of chills. आज का जो position है तो काफी डर के साथ लेके बैठा हूं मैं. लाइक आई हैव दैट काइंड ऑफ फियर कि अगले सेकंड क्या हो जाए. हो सकता है कि 16,350 पुट इमीडिएटली 27 रुपीज से जाके 227 पे पहुंच सकता है. लाइक कोई भरोसा नहीं है. आई डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाई द फक आर बी पेइंग ऑल दीस काइंड्स ऑफ एक्सॉर्बिटेंट चार्जेस टू एनएसीज एंड दिस ब्रोकरेज फर्म्स एंड सेबी का नाम लेते हैं मेरे को दिमाग खराब होता है. व्हाटएवर. सो I don't know, like when we are not even protected, when the markets are not even freaking regulated, what's the job of this regulator apart from making shitty rules? ठीक है. आई थिंक आई पोस्टेड अ वीडियो एंड यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा. लाइक इफ यू हैवंट वॉच द वीडियो मार्केट मैनिपुलेशन के ऊपर, लाइक यू कैन गो एंड वॉच इट. बट इवन नाउ मैं काफी डर के साथ ही मैं पोजीशन लेके बैठा हूँ. एंड वी आर ऑलरेडी लुकिंग एट वी आर एट अ ड्रॉडाउन ऑफ अराउंड 2.5 पॉइंट्स, 2.5-3 पॉइंट्स के आसपास ड्रॉडाउन चल रहा है. बट दैट्स ओके, नॉट एन इशू, बिकॉज देखेंगे क्या होता है. I have a 16,700 call option and the put options are split between 16,350 and 16,300 in 4:3 ratio, and we are slightly less than 2 points of a drawdown, maybe 1.5-2 points drawdown पे चल रहा है. but that's okay. मेरा जो adjustment point रहेगा ये 200 moving average तक मैं वेट करूंगा. जैसे 200 moving average breach हो जाएगा then most probably I'll shift all the 16,350. नहीं 200 मूविंग एवरेज थोड़ा बहुत लेट हो सकता है. अगर यहाँ पे डिली डैली करके 200 मूविंग एवरेज तक आए देन नो प्रॉब्लम. बट इफ एट ऑल वी स्टार्ट कैस्केडिंग डाउन, आई विल बी टेकिंग दिस 16,350 पुट ऑप्शन अवे एट अराउंड 31 तक मैं वेट करूंगा. उसके बाद मैं इसको निकाल के 16,300 पुट ऑप्शन पे मैं शिफ्ट करने वाला हूँ. सो दैट्स द आइडिया फॉर द एडजस्टमेंट टुडे. एंड या आई कीप यू गाइस पोस्टेड. आई एम बीइंग लाइक एक्सट्रीमली कॉशियस. I'll be taking out my positions at the first signs of discomfort. मेरे को जैसे काफी ज्यादा uncomfortableness फील होता है, I'll be taking out my position. क्योंकि भाई देखो, पैसे कभी भी बना सकते, कहीं किसी चीज पे बना सकते, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल पीस. मतलब ऐसे डर डर के ट्रेड करने में क्या मजा है यार. मतलब आई एम अगेन सेइंग September 1st I won't be trading, and a lot of folks are talking about it, and it's a good thing that all the people are coming together as a community, at least this once. अगर September 1 से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है तो विल कंटिन्यू इट फॉर द होल वीक. सितंबर पूरा फर्स्ट वीक मतलब हम ट्रेड नहीं करेंगे. टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल ट्रेडिंग टुडे. ऑफ कोर्स लाइक आई हैव बीन स्कार्ड. ठीक है, मैं वो स्क्रीनशॉट्स, वो जो टिक्स, वो देख के मतलब इतना डर लगा मुझे. देखो, कोई चीज कुछ नहीं कर सकता यार. मैं मतलब मेरे रिस्क मैनेजमेंट को कितना भी मतलब मैं प्राउड फील करूं, मैं इतना स्ट्रांग रिस्क मैनेज करता हूं, ये करता हूं, फर्क नहीं पड़ता है. फर्क ही नहीं पड़ता ऐसे चीज में. आपके पास एल्गो भी है, वो भी फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. सो इट्स ऑल इट्स काइंड ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल. व्हेन थिंग्स आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, that kind of makes me uncomfortable. ठीक है, like I want things to be under control. That's why like I'm trading intraday, right? अगर मुझे भगवान भरोसे मतलब छोड़ के मतलब बैठना है, मैं मस्त पोजिशनल स्ट्रैडल्स, पोजिशनल ट्रायंगल्स लेके बैठता था. आई वॉन्ट कंट्रोल. दैट इज वाई लाइक वी स्टे इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन फॉर 3-4 hours a day, and then we try to eliminate all sorts of randomness from the equation. हमें कोई randomness नहीं चाहिए. That's why like we are taking so much of efforts. A quick immediate move towards the downside, and 200 moving average was also breached really fast, and I was waiting for the 200 moving average to hold, and once that got breached I had to act, and at that point the puts had already bled quite a bit, and took around 2-3 points of damage on that, but that's okay, I guess. So currently we are down by 12k, which translates to somewhere around 3.5 points. 3.5 points. So I'll be calling it a day if we touch 20k mark to market again at any point. अगर फिर से 20k touch हो जाता है तो that's the end of the day. If we test the day's low again, that will be the end of the day. I don't want to deal with all these things. क्योंकि इंसेंटिव है ही नहीं, तो खाम का एडजस्ट करके बैठने का कोई सेंस नहीं बनता है. I'll keep you guys posted. The time is
10:09. अभी I am 180 points away from the call side and I am almost 260 points away from the put side. तो पुट साइड से मैं काफी दूर मतलब ट्रेड कर रहा हूँ. दैट इज बिकॉज वी आर एट एन ऑल टाइम हाई एंड इफ एट ऑल वी मूव हायर द विक्स विच हैज शॉट अप थ्रू द डे. 1 second. सो मैं पुट साइड से मतलब मैं इसलिए थोड़ा दूर हूं मैं. दैट इज बिकॉज now that the day's initial balance has been formed, the probability of the call spiking is a bit less compared to how much the puts can expand. So the puts expansion is a real thing now and that is why यहाँ पे जो VIX भी increase हुआ है. तो if at all we start heading back up तो VIX और धीरे धीरे गिरता जाएगा and that will benefit our position. Of course volatility short है. But if at all we start testing the day low again, फिर से नीचे आना शुरू कर देते हैं, then most probably I'll just square it up and take a loss, no problem. As of now, we are down by around 4 points. Alright guys, this down move was kind of, unmanageable. So pretty much closed the day. Had to take the hit because from the open, it's been, 593, almost 600 to almost we touched 400. It's a 200 point downfall, which none of the non-directional traders would have been able to manage. And the VIX also shot up by almost 3-4% and there was absolutely no support from the call side, and definitely I had to take this loss. So refresh kar deta hu. So I took a loss of around 23k 22k, which is around 0.5% of my deployed capital. But things could have been worse क्योंकि मैं जहां पे मैंने एग्जिट किया, जैसे ये लेवल ब्रीच हो गया ना, उस पॉइंट पे मैंने एग्जिट कर दिया. इस पॉइंट पे, ये पॉइंट फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके रिट्रेसमेंट किया और सेकेंड टाइम जब ये टेस्ट कर रहा था उस टाइम पे मैंने इमीडिएटली मैं क्लोज कर ही दिया. दैट इज बिकॉज ये ब्रीच होते ही नेक्स्ट प्राइस एक्शन पॉइंट यहाँ पे रहेगा. तो अगर यहाँ तक आ जाता है, मोस्ट प्रोबेबली आई वुडंट बी एबल टू मैनेज. एंड इतना जल्दी क्लोज करने के बावजूद मैंने 0.5% हिट लेना पड़ा. बट आई गेस इट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम. एंड a lot of people were asking like, did I take a hit in that 16450 thing? So I'm gonna show you guys. तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ है. तो दिस इज माय अगस्त, पूरा अगस्त मंथ का पीएनएल दिखा देता हूँ. उसमें क्या है, वैसे भी अगस्त मंथ खास चल नहीं रहा है. अगस्त मंथ इज नॉट गोइंग दैट वेल फॉर मी. लुक एट दिस. अगस्त मंथ में अभी तक सिर्फ 3% ही मतलब रियलाइज किया. वी हैव जस्ट मेड अराउंड 3%, नथिंग मेजर. बट यहाँ पे देखो, व्हेन वाज दैट, दिस वाज ऑन this is the thing, right? So August month पे we have made around 1.5 lakhs, but charges काफी गया है because we took kind of a big hit, 33k hit. तो उस दिन जब hit लिए थे उस टाइम उस दिन थोड़ा बहुत loss हो गया था. And I think that's the culprit for the month. And again today also we took quite a substantial loss because हम profit जो book कर रहे हैं, you can see that 10k 12k 15k 17k only expiries पे मतलब थोड़ा बहुत decent profits book कर रहे हैं. वरना most of the times we are trying to book like minuscule profits. But the market itself has been tough. It's really tough क्योंकि 200 point 300 point ऐसे मूव कर रहा है without even the premiums to support this kind of a movement. So I think it's kind of a shakeout phase. All we need to do is just stay put and stick to our strategy. Our day will come, our time will come. Just make sure that you don't make big losses, don't take bigger losses. So the markets will be there. मेरे पहले था, अभी भी है, मेरे बाद भी रहेगा. आपके पहले था, अभी भी है, आपके बाद भी रहेगा मार्केट. इट्स जस्ट दैट like we need to make sure that we stay in the markets by aggressively risk managing our positions. So all that said, you can see here, this is the Friday's thing. Okay, मैं डेट भी डाल देता हूँ, ठीक है. So what is that date? Friday, right? 20th को हुआ था. तो 20th को मैंने कहा था 12k का आसपास कुछ प्रॉफिट बना है. एग्जैक्टली 12k प्रॉफिट, चार्जेस 487 रुपीज एंड 1157. तो ट्रेड बुक अगर दिखाना चाहिए तो यहाँ पे देख लो. ट्रेड बुक 16450 कॉल ऑप्शन एंड 16450 पुट ऑप्शन, दोनों में प्रॉफिट है. एक में 9000 रुपीज और एक में 2000 रुपीज.
इट्स गॉड्स ग्रेस, ठीक है। अगर लॉस होता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं अपना बड़प्पन नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। मैंने जल्दी क्लोज किया, मुझे पता था, कुछ भी नहीं पता था मुझे घंटा भी पता नहीं था ऐसे होता करके। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग वीडियो से बोल रहा हूँ कि वो इंसिडेंट के बाद मैं काफी डर गया हूँ कि मतलब इंट्राडे पोजीशन लेने के लिए। तो ऐसी चीज है, अगर होता तो मेरा काफी एक अच्छा खासा लॉस हो जाता था। लाइक देयर इज नो डिनाइंग दैट। अगर मैं यूजुअली मैं स्ट्रैडल्स खेलता नहीं हूँ, करेक्ट, लाइक आई यूजुअली प्ले इन ट्रायंगल्स, बट उस दिन मैं एग्जैक्ट स्ट्राइक पे बैठा था। बट गॉड्स ग्रेस और लाइक आई एम बीइंग लाइक ब्लेस्ड बाय गॉड और ब्लेस्ड बाय योर लव, आपका जो दुआ है शायद वही बचाया रहेगा मेरे को। बट या इफ एट ऑल आई वुड हैव टेकन अ लॉस इट वुड हैव बीन बिग, मे बी 5, 10, 15 लाख तक भी लॉस हो सकता था। 500 पॉइंट अगर नहीं, सिंस आई वाज ट्रेडिंग विद लाइटर क्वांटिटी, दैट इज माय डिसीजन, करेक्ट। तो अगर 500 पॉइंट भी अगर स्लिपेज मिल जाता है, 200 पॉइंट भी स्लिपेज मिल जाता, अच्छा खासा 1-2 लाख मिनिमम लॉस हो ही जाता था। बट गॉड्स ग्रेस आई केम आउट अनडेंटेड। एंड वैसे भी अगस्त मंथ, एज आई सेड, इट्स नॉट गोइंग लाइक रियली ग्रेट, क्योंकि we made around 1.5 lakhs, which is close to 4%, not 4%, 3.5%, but after charges it's just 1.16 lakhs. And आज का लॉस के बाद like we are sliding below 1 lakh. But देखेंगे, एक एक्सपायरी है और काफी दिन है, let's see what's gonna happen. And yeah, I'll keep you guys posted.